have a question. Sure, go ahead. Ma'am, as you told that if the child is convulsing, we will give 2 ml per kg of 3% saline. It will increase roughly by 5 MEQ over 20 minutes. So if we increase by 5 MEQ in 20 minutes, then for the next 23 hours, we will just increase by 5 MEQ further or by 10. If बस अगर आपके depending what is the symptoms, अगर आपको जो पहला मैंने दिखाया था algo, you are following that you are giving 2 ml per kg of hypertonic saline instantly, this will raise your serum sodium by 3 to 5 milliequivalents. If your 3 to 5 milliequivalents you have achieved the goal of 5 milliequivalents for that day and your patient is now symptom free, you will observe. Depending what is the situation of the patient. This is for the matter of learning. Patient don't come by presentation. They behave differently every time. Second question. Ma'am, second question is the target should be 125 or 135. देखो आपका टारगेट तो 135 है ना. यू नीड योर सोडियम्स टू बी एटलीस्ट 125 से ऊपर चाहिए आपको. सही है. वंस योर पेशेंट इज सिम्टम फ्री, when your primary goal is to treat the primary cause that you are dealing with. ठीक है. चाहे वो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन से हो, आइसोटोनिक फ्लूइड से हो, उसको सॉल्ट इनटेक से हो, यू विल मूव फ्रॉम आईवी टू ओरल. जितना हो सकता है आप उतना वो करोगे. डिपेंडिंग आपका कॉज क्या है. आगे हम कॉज की तरफ आ रहे हैं. वट एवर इज द स्पेसिफिक कॉज, यू विल ट्रीट योर स्पेसिफिक कॉज. क्वेश्चन है कि जो 3% सेलाइन है वो तो अवेलेबल नहीं है ना. 3% सेलाइन इज रेडियली अवेलेबल. मतलब बहुत सारी फार्मेसीज अब तो डिस्पेंस करती हैं. In whole districts, what it is not available, Mardan or Peshawar even. Yes, ma'am. Yes, in Quetta also. Okay, then we have solutions to that as well. We always have solution. Bicarb तो होता है ना सबके पास? Yes, ma'am. Okay, but that will be actually that is very. But we can give bicarb if we do not have hypertonic saline. अब सवाल में नहीं है और क्वेटा में नहीं है. I cannot do anything about that. कैलकुलेशन सेम होगी मैम. देखो कैलकुलेशंस डिपेंड करते उसके, वो फिर कैलकुलेशन आपकी आ जाएगी. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ बाइकार्ब. जो बाइकार्ब हमारे पास आता है, इट इज 50 ml एंड इट कंटेन्स 44 मिली इक्विवेलेंट्स. ठीक है. वो उसके अंदर बहुत और 1 ml ऑफ बाइकार्ब विल इंक्रीज 1 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सोडियम and 0.5 ml of hypertonic will increase 1 ml of hypertonic saline will increase 0.5 milliequivalents of sodium. ठीक है. तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए you have to give, and you cannot give bicarb directly. मतलब peripheral vein से इतना concentrated bicarb नहीं दे सकते आप. You will burn the vessels of the patient. You will need a bigger vein for that. तो या तो सेंट्रल लाइन हो, सेंट्रल लाइन नहीं है तो फिर आप उसको उस फ्लूइड के अंदर डालो, and then your calculations will change. Your calculations will change because you have to have a saline in which you will mix your bicarb, and then you can give. I'll also show you another formula by which you can calculate your sodium deficits to correct hyponatremia. Hypernatremia पे जब आएंगे तो वो फॉर्मूला हाइपरनेट्रीमिया में उसी को आप यूज कर सकते हैं हाइपोनेट्रीमिया में, जिनके पास हाइपरटोनिक सेलाइन नहीं है. डेफिसिट कैलकुलेट करके एंड देन दे कैन इजीली करेक्ट. बता दें कि जो 120 आपने हाइपोनेट्रीमिया की मतलब एक रेंज में रखा है 120, तो वो 120 सब में अप्लाई होगा? नहीं बेटा, देखो आपके पास पेशेंट कितने सोडियम पर आ रहा है. देखिए 120 ये तो इस बच्चे के एग्जाम्पल पर है ना. इसका सोडियम इस पेशेंट का केस का सही है. मतलब आपने 10 का डेफिसिट रखते हुए आपने उस रेंज को सेट करना है. एग्जैक्टली. ये उस पॉइंट इन टाइम का सोडियम का डेफिसिट है जो आपने निकालना है. इट्स वेरी इजी कि मैं 140 का डेफिसिट रख दूं और फिर उसको निकाल दूं, लेकिन इतना सारा हाइपरटोनिक कैसे दोगे? इतना सारा हाइपरटोनिक दोगे. समझ आ गई. ठीक है, समझ आ गई. ओके, लेट्स मूव ऑन टू स्पेसिफिक ट्रीटमेंट. स्पेसिफिक कॉज का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट पे मूव करते हैं. इफ यू आर डीलिंग विथ हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया,
अगेन दिस इज हाइपोटोनिक हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया. अब जितने भी इस वक्त हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं दैट इज हाइपोटोनिक, द ट्रू वन. हाइपोटोनिक हाइपोवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया की बात कर रहे हैं. रीनल एंड एक्स्ट्रा रीनल, वी टॉक्ड अबाउट रीनल causes and extra renal causes are GI losses. You have to treat diarrheas. If you are dealing with bowel obstruction, treat your bowel obstruction. If there is third spacing like burns, treat it with IV fluids. And if you are dealing with renal conditions like cerebral salt wasting, then you have to give isotonic or hypertonic fluid. If you are dealing with diuretic use, stop the diuretics. If you are dealing with mineralocorticoid deficiency, start steroids. And if you are dealing with RTS, give sodium, give bicarbs and give fluids so that you can correct the acidosis. Okay. If the patient is isotonic and he has hyponatremia. Okay. Next slide, Manur. Okay. Now your patient is now your patient has sorry, this is this is not tonic, it is euvolemic hyponatremia. It is hypotonic euvolemic hyponatremia when we are dealing with SIADH and hypothyroidism. If you are dealing with SIDH, we know that the treatment is fluid restriction. Move on to next slide. Let's deal with SIDH and cerebral salt wasting. We know that SIDH is the persistent vasopressin secretion in the absence of any stimulus. ऐसा ही है SIDH में there is excessive vasopressin secretion, ADH बहुत release हो रहा है, it keeps on absorbing the water, still collecting tubules से, and patient का जो body status है वो बढ़ने लग जाता है. फिर एक टाइम आता है he gets hypervolemic, but usually they stay euvolemic. Most of the time they stay euvolemic unless until you don't keep on infusing fluids. ठीक है. What are the causes of SIDH? It is well known. We have CNS cause, drug causes, pulmonary diseases, and there are other causes as well, idiopathic, including. I'll not go into the causes. Move on. We have diagnostic criteria for SIADH. Whenever you are if you think you are dealing with SIADH, you need to fulfill this criteria to conclude that this is SIADH. Your patient is hypotonic and he is hyponatremic, but he is euvolemic. Right? We are dealing with true hyponatremia, that is hypotonic. इनकी osmolality low है serum की, but they are euvolemic. And the urine की जो osmolality है, urine osmolality is more than 100. Your urinary sodiums are elevated. We dealt all this in the algorithm. जो पेशेंट जो euvolemic होते हैं उनका urinary sodium more than 20 होता है. Now urine osmolality either more than 100 है, less than 100. If this is more than 100, then you are dealing with SIADH, and if it is less than 100, then you are dealing with what? कौन बताएगा? Renal नहीं, कौन बताएगा? So see, I am checking your attentivity. You are dealing with primary polydipsia. ठीक है. चलो, your urine osmolality should be more than 100. Your patient should be euvolemic. Your patient should be hypotonic. सही है. There shouldn't be any other advanced kidney disease or cardiac disease or liver disease. And you have excluded all the other possible alternative causes of euvolemic hypotonic hyponatremia. Right? Now let's move on. Cerebral salt wasting. Cerebral salt wasting, where we have hyponatremia because the body is losing sodium in the urine, and there is extreme extracellular water deprivation. And what are the causes? We all know the causes are infectious and post CNS surgery. The causes are almost more or less they are almost same. So what are the similarities between cerebral salt wasting and SIDH? You have a patient, you are dealing with a patient and you are confused between SIADH and cerebral salt wasting. Manur, आगे कर लो. Your similarities between SIADH and cerebral salt wasting is they both have hypotonic hyponatremia. Their urinary sodiums are high. Their phenols would be high, obviously, because urinary sodium high है तो phena भी high होगा. And they both have urine osmolalities more than 100. ऐसा ही है.
सही है. And now let's come to the differences that will help you out in distinguishing between cerebral salt wasting and SIADH. You will look at the volume status. SIADH wala will be euvolemic, but cerebral salt wasting wala would be hypovolemic. Next. सही है. There will be no abnormalities in the BP when you are dealing with SIADH because they are euvolemic, so the blood pressures will be normal. However, when you are dealing with cerebral salt wasting, the patient would be hypotensive because there is loss of intravascular volume as well. Your hematocrit in cerebral salt wasting will be high because of dehydration. Urine volume will be high in cerebral salt wasting. There is excessive urine, your patient is dehydrated and he's losing sodium and water as well, both. ठीक है, लेकिन SIADH में there is low urine, the body starts conserving water. So far so good. Now let's come to hypotonic but hypervolemic hyponatremia. The causes are heart failure, hepatic failure, renal failure, nephrotic syndrome. We have to treat all the pertinent causes. Hepatic failure है तो आपने Lasix, spironolactone ये दे देना है. And if you're dealing with heart failure, you will use diuretics. Renal failure में you know what you need to do and you know what you need to do. In nephrotic syndrome, you need to give steroids. Next. How much time do we have? We are almost done. Chalo, we don't have much time. We have to move very quickly. चले आगे? चले. Let's move on to the complication of rapid correction. यही बच्चा जिसका आप सब लोगों ने सोडियम का जो डेफिसिट है वो 405, 406 निकाला था. अगर आप एक साथ करेक्ट कर देते तो आप लोग क्या करते? आप लोग cerebral pontine myelinosis करवा देते. And how do cerebral pontine myelinosis happen? What is the mechanism of cerebral pontine myelinosis? मानो नेक्स्ट करके स्पीड से नेक्स्ट कर दो. ठीक है. योर सेल्स आर क्रॉनिकली अडेप्टेड टू हाइपोनेट्रीमिया. हमने ब्रेन अडेप्टेशन की बात की थी. And your cells are absolutely adapted to this hyponatremia. And if you rapidly correct hyponatremia, what will happen? You will break down the blood-brain barriers, you will expose the glial cells, and you will deplete the cellular ATP, and apoptosis will, you will induce apoptosis, and you will cause osmotic demyelination. What are the risk factors for OPS? Chronic hyponatremia, sodiums less than 105 milliequivalents, seizures on presentation, and overcorrection. More than 20 milliequivalents in 24 hours आपने correct कर दिया है, and hypokalemia. Okay. Let's skip the clinical features and let's move on to the hypernatremia. Case पे आ जाएं. ठीक है. Now this is a 3-year-old boy and he weighs 15 kg and he's admitted with complaints of watery diarrhea and he is dehydrated and he has serum sodium of 155 milliequivalents per liter. So what is the pathophysiology of hypernatremia? I clearly told you when we started that the sodium less or sodium more is purely the disorder of electrolyte free water gain and loss. And here when we are dealing with hypernatremia, this is the imbalance of water handling that causes hypernatremia, and there is increased effective osmolality. The plasma osmolality of the patient increases. Manu, next. मैं बहुत आगे आ गई हूँ. I'm on the next slide. Yes, exactly. So if there is hypernatremia, there is either water loss, या तो फिर there is sodium gain. Right? So how do you approach when you are dealing with hypernatremia? You will assess the volume status because हमें पता है serum osmolality तो high होनी है because patient hypernatremic हो गया है. Osmolalities are definitely high. You will assess volume status. You will go for history and examination, and you will diagnose hypervolemia. Move on. आप उस पर आ जाएं. Yes, exactly. Stay here. Now volume status या तो hypernatremia के साथ patient hypovolemic होगा, euvolemic होगा या hypervolemic होगा. Now you move on to next, please. Next slide. Okay.
Now, when dealing with hypernatremic and hypovolemia, the causes are again same, renal and extrarenal. If the causes are extrarenal, we know that we are dealing with GI losses and burns. And if the patient has renal losses, we know that we are dealing with post-obstructive diuresis, diuretics, and osmotic diuresis. And next, please. And if you are dealing with euvolemic hypernatremia, we are dealing with nephrogenic DIs. And if we are dealing with hypervolemic hypernatremia, we are dealing with iatrogenic hypernatremia, जो हम खुद कराते हैं मरीज को बाइकार्ब देकर, सेलाइन देकर, okay? Or either we are dealing with primary hyperaldosteronism. Next, please. So the causes that we deal with hypovolemic and euvolemic hypernatremia, they are basically due to water loss. And when we are dealing with hypervolemic hypernatremia, we are talking about sodium gain, because we are inducing this gain, we are inducing this iatrogenically. Okay, brain adaptation is more or less similar, because the normal brain volume, the patient is the patient has to face hypertonicity, hypernatremia hua, there is water loss from the brain, and there is brain shrinkage. What will the brain do to come back to normal size? It will start inflow of electrolytes and osmolytes, and it will come back to its normal brain volume, and all these takes 48 hours once again. Okay? Now, how will we work up a child who is having hypernatremia? We will go for osmolality, serum and urine, because we need to know, although we know that serum osmolality will be high, but we still need to make sure we need serum and urine osmolalities, we need serum and urine sodium, we need renal functions, and we need FeNA. Okay. Now, if you are dealing with hypovolemia, so we know that we'll be having orthostatic changes. ठीक है, extra renal हो या intrarenal हो, we know we'll be having orthostatic changes, hypotension होगा, pulse ज़्यादा होगी, and we know if we are dealing with urinary causes, then the sodium will be more than 20. If the causes is extrarenal, the urine sodium will be less than 20, and urine osmolalities in both the cases will be more than 100. There won't be any edema. Next, please. And if you are dealing with euvolemia, then there are no orthostatic changes. Urinary sodiums will be more than 20, and your urinary osmolalities will be generally less than 200, between 200 to 300 most of the time, and there will be no edema. And when you are dealing with hypervolemia and hypernatremia, there will be no orthostatic changes. Mildly, yes, possible patient might have hypertension, but usually not. Your urinary sodiums will be more than 20, your osmolalities will be more than 100, and yes, the patient will be edematous. How will we treat? Always ask yourself, what is the volume status of the patient? Do your patient needs any emergent fluid resuscitation? Dehydrated hai kya, hame foreign se fluid dena hai? What is the magnitude of water deficit that needs to be restored? Because right now, because jab hum hypernatremia ki baat karte hain, we know that we are dealing with either water loss or sodium gain, so hame pani dena hai, we need to give water, so we need to calculate water deficit in these patients. And what is the rate at which the hypernatremia should be corrected? Is there any other fluid losses going on along with hypernatremia? Okay, and what is the underlying cause? Okay, this is the very famous mild moderate dehydration chart that we have been following throughout the residency. 3 to 5, 6 to 9%, and more than 10%. I won't be focusing on this. We all know the symptoms and we all know the signs. Now let's calculate free water deficit. We all know that free water deficit is calculated with the following formula: 4 ml per kg into weight, 4 into weight into desired change in plasma sodium. Sahi hai? So we again will be dealing with the same thing. We'll do this case. So you have to calculate the water deficit in this given case. So always check whether your hypernatremia is acute or chronic, less than 48 hours, more than 48 hours. And next, please, and your rate of fluid correction should not exceed more than 10 to 12 milliequivalents per liter per day. Okay. And your choice of fluid will always be an electrolyte-free fluid. You do not need to give electrolyte concentrated fluid. Okay. Next, please. Nelson has beautifully given the correction duration
we can always follow this. If you have what is your sodium range, and then you can correct it accordingly, but remember to replace ongoing losses. Next, Mahanur. Okay, let's first treat the specific cause that we are dealing with. Renal, extra-renal, we know if we are dealing with extra-renal, it's IV fluid. And if we are dealing with renal, whatever the cause is, treat the cause, right? And if the patient is euvolemic and the patient is hypernatremic, we know we are dealing with DIs, and we know the treatment of DI, right? If we are dealing with central DI, it is DDAVP, and if we are dealing with nephrogenic DI, we know we need to give fluids and thiazide diuretics. Now, next please, hypervolemic hypernatremia, iatrogenic, that we induce. Stop the fluid, give free fluid, replace free fluid. Okay, whatever the agent is, bicarb or hypertonic saline, stop that and give free fluid. And primary hyperaldosteronism, you need to treat whatever the cause is, primary hyperaldosteronism. Next, now do not move the slide. Okay, bas yahi pe rahe. Now, we know that this patient came with all these complaints. Now, can anyone calculate what is the free fluid deficit in this child? जल्दी जल्दी free fluid deficit बताओ, कितना होगा free fluid deficit? Free water deficit कितना निकलेगा? इसका water deficit कितना होगा? How much water will you give to this child? Considering he is dehydrated, he has diarrhea, he has ongoing losses, and he is hypernatremic. Okay, great, 600 ml, excellent. ठीक है, मानो next करो. Okay, move on. Next. Let's move on from laboratory. Exactly, move. Yes, stay here. ठीक है. The deficit is 600 ml. What next? I told that the patient has ongoing losses. Okay, next. Calculate. पीछे जाओ, मानो. Okay. Calculate maintenance fluid. You also need to give this child maintenance fluid, because you know that your child is dehydrated, and first आपने dehydration correct करनी है. Whenever you deal with hypovolemic hypernatremia, see the status of dehydration: 3 to 5, 5 to 5 to 9 or more or 10%. Right? पहले हमने dehydration का status देखना है. Always correct dehydration, because in the face of hypernatremia, isotonic fluid, normal saline, is hyponatremic when in contrast to the body sodium. So always treat the patient with isotonic fluid and correct his dehydration. Dehydration का fluid दे दिया. Calculate his daily maintenance fluid, which for this child is 1250, and then plus 600 is the free water, and you will give free water. And how will you calculate the free water? The change in serum sodium by giving free water. Next, now the next slide is important. Now next karo Manu, the formula will come in the box. Next please. Yeah, stay here. Now this is the formula. Change in serum sodium, you know, by giving XYZ amount of free water. ऐसे ही calculate करके आपने दे दिया. अब आपको पता कैसे चलेगा what amount of change in sodium that fluid will bring? Whatever fluid you are giving, electrolyte free fluid. So the formula is, this formula was presented by Madiha. Okay, MADIA apostrophe S. Okay, this lady came up with this formula, and the formula is infusate sodium. Whatever fluid you are giving, you will subtract patient serum sodium from that, and you will divide it with total body water plus 1. Am I clear? यहाँ तक am I clear? Everything is clear? Okay, I'll assume that everything is clear. So, considering कि हमें हमारा free fluid आया था, free water deficit आया था 600 ml, and we know that we need to correct not more than 10 to 12 milliequivalents per liter per day when dealing with hypernatremia, right? So if we use 1 liter of dextrose water, whether 5 or 10, doesn't matter,
1 liter of dextrose water, it is absolutely sodium free. तो infusate वो होगा जो आप दोगे, जो आप पेशेंट को दे रहे हैं. And this mind it, this formula calculates whatever infusate sodium you are using. This formula calculates per liter. जो भी आप फ्लूइड यूज करें वो लीटर वाला यूज होगा. वो कैलकुलेशन फिर आपको करनी होगी कि आप कितना देंगे तो फिर आप इतना देंगे तो फिर इतना सोडियम करेक्ट होगा. You will subtract as accordingly, right? So if we use 1 liter of dextrose water, now this dextrose water is free of sodium, so your zero is your sodium, infusate sodium. Patient had serum sodium of 155, so 0 minus 155 and then you divide it by 15 into 0.6 जो patient का total body water है plus 1. Your answer will be 15.5. Forget about the plus minus sign, यहाँ maths नहीं है, so we will not consider this plus minus sign. So your answer is 15.5. So if we infuse 1 liter of dextrose water to this child, उसका सोडियम जो करेक्ट होगा वो 15 मिली इक्विवेलेंट्स करेक्ट होगा. But we need to correct only 10 to 12 milli equivalents. So our free fluid deficit was 600 ml. So if we give this child 600 ml, we will correct 9 milli equivalents of sodium in 24 hours. Am I clear? Did you get this Madhya formula? Yes, ma'am. Yes. Do we have questions on this? Because we are done. The presentation is over. Do we have questions? We are open up to questions. Yes, मैम ये 15 into 0.6 जो total body water है ये समझ नहीं आया. अच्छा शुरू में 15 into 0.6 टोटल. सबसे शुरू में मैंने जब स्टार्ट किया था सोडियम तब मैंने बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स दिखाए थे. दैट आर टोटल बॉडी वाटर कंपार्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर. तो जब हमारा बॉडी कंटेंट इज 60%, हमारा बॉडी का वाटर कंटेंट इज 60%, तो जब टोटल बॉडी वाटर निकालना होगा तो आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे पेशेंट के वेट को 0.6 से. जो भी आपका वेट होगा, कंसिडरिंग एन अडल्ट, इफ यू आर डीलिंग विद एन अडल्ट तो 0.6 into 70 हो जाएगा. बहुत इन्फेंट अगर है, छोटा बच्चा है तो 0.7 होता है उनका टोटल बॉडी वाटर. महानूर, इफ यू कुड गो बिल्कुल टू द स्टार्ट, Just a minute. एंड द स्लाइड शो एंड देन आप ऐसे ऊपर इस तरह चले जाओ स्लाइड शो एंड करके. दैट विल बी इजियर आई सपोज. ठीक है, तो ये टोटल बॉडी वाटर का फॉर्मूला है, यहां से आया है 0.6 into weight. सही. ओके, तो आपने टोटल बॉडी वाटर के फॉर्म, आपने टोटल बॉडी वाटर से उसको किया, आपका 15 आया एंड देन यू गिव 600. दिस विल करेक्ट 9.3. आई होप दिस इज करेक्ट. आई होप दिस इज क्लियर, बिकॉज अगर ये क्लियर नहीं है तो वी नीड टू मेक इट क्लियर. कल तक सबको सब कुछ भूल जाएगा. प्रैक्टिस होगी तो फिर याद रहेगा. Yes, you need to practice this again and again and again. You need to ask what are you dealing with when you deal with hyponatremia. So we have any questions? Do we have questions? Ma'am, hypernatremia was a bit tough one, but thank you for Sorry? making it clear. Sorry, please be clear. No, I was just saying that hypernatremia was a tough one. Hyponatremia was a tough one. Yeah. Yes, ma'am. Understanding it, but you made it clear. Okay, I made it clear. So, Thank you, ma'am. okay, thank you so much. अगर आप कोई question है, then we can continue, or else we can say goodbyes. Are there any questions? Ma'am, I have. May I know who is speaking? Ma'am, right now nobody is speaking. Okay, great. Or so, should I speak or should I remain silent? If there are no questions, we can conclude. Okay. Madam,
Yeah. हेलो कि हमने Dr. Asia. कैलकुलेट I am not कैलकुलेट madam. I am Dr. Asia. Call me Dr. ओके Asia. डॉक्टर आसिया कि हमने कैलकुलेट किया है कि हमें 1 लीटर देने से डेक्सट्रोज वाटर 15.5 मिली इक्वल्स सोडियम करेक्ट होगा, तो हमें ये हमने कैसे कैलकुलेट किया कि 600 देने से 9.3 करेक्ट होगा? अच्छा बेटा देखो आप थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन थी. व्हाट इज योर नेम? कश्माला कश्माला कश्माला. कश्माला. ओके कश्माला. देखो सबसे पहले we calculated what is the water deficit that we need to give this to this child, whatever the case is. I'm not talking about okay, let's talk about this pertinent case. Whatever is your fluid deficit, पहले आपने वो निकाला. आपने fluid deficit निकाला कि okay, this is the fluid deficit that I need to give to this child, free water deficit जो हम कह रहे थे. ठीक है, क्योंकि हमें जी, जी. वाटर देना है हाइपरनेट्रीमिया में. 600 ml आ गया इस पेशेंट का, 4 into weight into जो फॉर्मूला था. ओके, जी जी 600 ml आ गया. अब जो आखिरी वाला फॉर्मूला है, मदियास फॉर्मूला, जो इन्फ्यूजेट माइनस सीरम सोडियम डिवाइडेड बाय टोटल बॉडी वाटर प्लस 1, जो ये फॉर्मूला है ये 1 लीटर ऑफ वाटर के लिए है. ठीक है, वट एवर सलाइन यू टेक. इसको आप हाइपोनेट्रीमिया में भी यूज कर सकते हैं, हाइपरनेट्रीमिया को करेक्ट करने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि दिस डिपिक्ट्स चेंज इन सीरम सोडियम. लेट मी बी वेरी क्लियर, देयर आर मल्टीपल फॉर्मूलाज अवेलेबल, बट नो वन फॉर्मूला इज परफेक्ट. चाहे हम इस फॉर्मूला की क्यों ना बात करें, no one formula will tell you the true change in serum sodium. ये सब एक अंदाजा होता है that yes, it will bring about this amount of change in the serum sodium. सही है, तो आप इसको हाइपो एंड हाइपर सब में कर सकते हो, लेकिन आपका जो ये कैलकुलेशन है ये 1 लीटर ऑफ फ्लूइड के लिए करता है. सही है, तो सही. आपका जो इन्फ्यूजेट सोडियम है, तो अगर आप डेक्सट्रोज वाटर लेते हैं, इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ सोडियम, उसके अंदर 1 मिलीकुलेंस भी सोडियम नहीं होता, तो आपका इन्फ्यूजेट सोडियम क्या हो गया? 0 हो गया. सही है, जी जी इन्फ्यूजेट सोडियम 0 हो गया. और अब पेशेंट का सीरम सोडियम था 155, आपने उसको माइनस कर लिया. अब नीचे पेशेंट का टोटल बॉडी वाटर आ गया, एंड देन आपने उसको प्लस कर दिया +1, जो भी टोटल बॉडी वाटर आया 6 into 15 करके जो भी टोटल बॉडी वाटर आया, जो आंसर आपका आएगा, ये आंसर ये बताएगा कि 1 लीटर पानी, 1 लीटर डेक्सट्रोज वाटर विल करेक्ट दिस मच अमाउंट ऑफ सोडियम. इतना चेंज सोडियम के अंदर आएगा. सही. अगर आप 1 लीटर डेक्सट्रोज दे देंगे तो 15 MEQ का चेंज आ जाएगा पेशेंट के अंदर. हमें 15 MEQ का चेंज नहीं चाहिए, हमें चाहिए एटलीस्ट मिनिमम, मैक्सिमम 10 का, मिनिमम हमें 5 to 8 का या 6 to 8 का चाहिए. राइट, तो आपको जितना चेंज चाहिए, सही है, ये तो सिंपल मैथ्स है कि अगर 1 लीटर 1000 ml करेक्ट कर रहा है 15, कितना करेक्ट करेगा? अगर मुझे 5 मिलीकुलेंस करेक्ट करना है तो 5 मिलीकुलेंस कितने पानी से 5 मिलीकुलेंस का चेंज आ जाएगा? ठीक है, 1000 into 5 डिवाइडेड बाय 15.5, ऐसा ही है. ठीक ठीक जी. सही है, तो आप उतना फ्लूइड उसको दे दोगे, उतना एक्स्ट्रा फ्लूइड अपार्ट फ्रॉम योर रिहाइड्रेशन एंड मेंटेनेंस फ्लूइड, ये उसके अंदर नहीं आता. राइट, सही. थैंक यू मैम. डॉक्टर आसिया. Dr. Can we rapidly correct acute hyponatremia? We can rapidly correct acute hyponatremia and hypernatremia both. Having said that, क्या आपको पता है कि आपका पेशेंट जब भी आपके पास आता है, most of we do not know the duration. And mark my words, most of the time we do not know the duration, and this is a reality. We do not know the duration, क्योंकि हमारे पास जब पेशेंट आता है, it's almost the patient has passed around for 36-48 hours कर चुके होते हैं जब हमारे पास आता है. तो so most of the time we do not know unless and until हमें literally पता है कि this was the serum sodium 24 hours ago, and now after 24 hours this is the serum sodium. Yes, and the patient is symptomatic, corrected rapidly if within 24 hours है तो change. Ma'am, another question. For a convulsing child, like in the question you have discussed with us, मैम अगर कभी-कभार हमें कुछ इस तरह के सिनेरियोज गिवन होते हैं जिसमें हाइपोनेट्रीमिया की वजह से ही कन्वल्स कर रहा होता है, लेकिन उसमें पूछा होता है कि व्हाट इज द इमीडिएट स्टेप वुड यू डू, तो उसमें हम क्या, अगर ऑप्शन में कोई आईवी एंटी एपिलेप्टिक है तो क्या हम वो चूज कर सकते हैं रादर दिस हाइपोनेट्रीमिया? नहीं, देखो अगर आपका सोडियम दिया हुआ है, वो कह रहा है कि पेशेंट कन्वर्स कर रहा है हाइपोनेट्रीमिया की वजह से,
या हाइपरनेट्रीमिया की वजह से। भाई आपका पेशेंट कन्वल्स ही आपके इलेक्ट्रोलाइट की वजह से कर रहा है, तो आप उसको एंटी एपिलेप्टिक्स क्यों देंगी? देखो, nobody makes exam questions as such बात ईस्ट की हो रही हो, जवाब वेस्ट के हो, ऐसे नहीं होता ना। दे विल ऑलवेज आस्क पर्टिनेंट क्वेश्चन एज पर, या तो फिर वो उसके अंदर सोडियम नहीं देंगे, that this is a convulsing child, what will you do urgently? Obviously you will maintain A B C and then you will give any benzodiazepine, ऐसा ही है, ये तो सब करते हैं, हम सब करते हैं। एनी चाइल्ड कन्वल्सिंग, हमें सोडियम अभी पता नहीं है, सबसे पहले तो हम एमिडाजोलाम ही देंगे ना, या बेंजोडाइजेपिन, डाइजेपैम देंगे, व्हाटएवर बेंजोडाइजेपिन इज अवेलेबल विद अस, सबसे पहले तो हम वही देते हैं। एंड देन वी कम ऑन टू इलेक्ट्रोलाइट या कोई और, व्हाटएवर द कॉज इज, वेदर वी आर डीलिंग विद मेनिंजाइटिस एनकेफेलाइटिस XYZ, टू नेम द कॉज, मल्टीपल कॉजेज, ठीक है। फिर चीजें तो आपकी बाद में आती हैं। तो अगर सिनारियो में दिया हुआ है दैट यू आर डीलिंग विद हाइपोनेट्रीमिया, देन व्हाई वुड यू इवन सेलेक्ट एंटी एपिलेप्टिक्स? Yes, ma'am, got it. Thank you so much. Ask the question. There's a patient who has been complicated a lot. She came to us after being neglected for 15 days, Okay. vomiting and diarrhea. And then कहीं से उसने ट्रीटमेंट लिया, उसको ड्रिप्स वगैरह लगी, शी इम्प्रूव, शी वेंट टू होम। आफ्टर 1 वीक बिल्कुल अनकॉन्शियस और फिट्स के साथ आ गई। देन वी सॉ कि हाइपोनेट्रीमिक भी है, हाइपोकैलेमिक भी है। देन वी रिप्लेस द फ्लूइड्स, पेशेंट वाज इनिशियली इम्प्रूविंग, लेटर ऑन वी फाउंड दैट शी स्टार्टेड नॉडिंग her head and she has become so much irritable. She has been put on MRI and CT के ऊपर डिसीजन लिया गया कि she has encephalitis. अब इस स्टेज पे हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये सेरेब्रल सॉल्ट वेस्टिंग है, SIDH है, या इनिशियली जो सारे उसकी इलेक्ट्रोलाइट्स दे रहे हैं जो इसकी वजह से हो रहा है? इट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, या पेशेंट का रीनल फंक्शन ठीक है? If the renal function has इनिशियली यूरिन आउटपुट नहीं था और क्रिएटिनिन थोड़ा सा रेस था, लेटर ऑन वो जब इनिशियल ट्रीटमेंट से वो सब इम्प्रूव हो गया। Okay, now the patient has normal renal functions, right? And the patient is still hyponatremic and the patient is still hyponatremic, right? And you do not know what are you dealing with, whether you are dealing with encephalitis, induced SIADH or cerebral salt wasting. ऐसा ही है? Yeah, but ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा ये इशू आ गया कि लास्ट जो रिपोर्ट हमने इलेक्ट्रोलाइट्स कराई उसमें सोडियम इसका नॉर्मल आ गया। ओके, बिंगो, ठीक है। तो फिर अगर नॉर्मल आ गया तो फिर क्या करना है? व्हाई आर यू सो वरीड? मे बी ये जो CNS वो है एनकेफेलाइटिस की वजह से। देखो, व्हाटएवर यू मॉनिटर इट सीरियसली बिफोर एम्बार्किंग ऑन द ट्रीटमेंट। इफ योर पेशेंट हैज नॉर्मल रीनल फंक्शन, देन यू डू हैव रोल फॉर ऑस्मोलैलिटीज, यूरिन एंड सीरम ऑस्मोलैलिटीज, अनलेस एंड अनटिल बहुत ग्रेवली यूरिन रीनल फंक्शन डिरेंज ना हो, जैसे एंड स्टेज वाला पेशेंट है, उसमें आपको ऑस्मोलैलिटीज कराने का बहुत ज्यादा, यूरिन सोडियम और ये सब कराने का बहुत ज्यादा आउटकम नहीं मिलेगा। बट having said that, patient के renal functions are normal, absolutely, the kidneys are working well, then why not categorize your patient's hyponatremia as per your serum osmolalities and urine osmolalities, go for urinary sodium, and then conclude what are you dealing with, because concurrently अगर पहले वो dehydration में थी, likely this hyponatremia has led to seizures, or she has had an additional superadded infection that has caused her to convulse, and then she has developed encephalitis, viral or bacterial, nobody knows, meningitis. So we do not know right now there is no clarity in the picture. You need to view the picture at a very big angle, and then you need to join all the pieces of puzzle and then come along. Thanks a lot. Thanks. Dr. Aasia Sidra Khalid is asking, what is the role of repeating serum sodium every 2 hourly? Will it affect our rate of correction of sodium? अगर बहुत जल्दी आपने करेक्ट कर दिया, if a patient responds, अगर you are giving, you decided to correct over 4 hours and over 4 hours, और initially 2 hours के अंदर आपका आधा fluid जा चुका है, and you check serum sodium and it has corrected up to 5 to 6 milliequivalents, and the patient is asymptomatic, this is enough for this day, आप बंद कर देंगे। दिस विल हेल्प, बिकॉज अगर वो मजीद 4 आवर, मतलब 4 आवर का जो इंफ्यूजन है, ठीक है, वो 10 करेक्ट करेगा, बट
These formula give you a judgment, they just give you a judgment कि भाई ये इतना correct होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है. How the body responds, nobody knows. ऐसा ही है. So this will help in deciding whether you will taper down your infusion or you will continue as such. Okay, and Dr. Aasia, there is a request that there should be another session by you on CKD and its management. No, sorry, वो team decide करेगी, वो मैं decide नहीं करूँगी. Right. और डॉक्टर इशाद, डॉक्टर सविता और ये लोग सारे जो पीएनएमडीपी के बड़े बड़े लोग हैं, दे विल डिसाइड. आई एम नोबडी टू डिसाइड. वैसे ये सीकेडी का सेशन तो हो चुका था, आई सपोज डॉक्टर सविता ने कंडक्ट कराया था. Maybe it has been missed. उर्दू में एक कहावत है, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया. तो जो सो रहे होंगे उन्होंने खो दिया, जो जाग रहे थे उन्होंने पा लिया. अच्छा, मैम any YouTube more पे भी हैं sessions में भी, you can find Oppo Exactly. F3. Thank you so much. Thank you so much. आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी. तो आप अगर वो डॉक्टर सविता ने पढ़ाया है तो वो तो हमसे भी सीनियर है, तो एक सीनियर का पढ़ाया हुआ आपको आपके पास लेक्चर अवेलेबल है, सो गो एंड उससे फैजियाब हो. ठीक है. एनी अदर क्वेश्चंस? Ma'am, there are Ma'am, now thank you thank so you much. notes. Okay, thank you so I much. think we have no more questions. Thank you so much. मैं गर्मी में बैठ बैठ कर अब पसीने से बेहाल हो गई हूँ. Please let me go. Okay, thank you so much. Okay, thank you, Dr. Okay. Aasia. Jazakallah, ma'am. Thank you. Thank you. Allah Hafiz. To the participants, please complete the survey link. I have posted the link. Thank you, everyone. We conclude today's session. Allah Hafiz. Allah Hafiz.